Good morning students. Today I am back with my third video. If you remember, in the first video we talked about nature of management, we talked about management as art. Second video we talked about management as science, and I am trying to recapitulate what management as science we talked about. So in management as science, I told you that management is body of knowledge. It is based on experimentation and observation. And third was universal validity, where we proved that management is body of knowledge like science is body of knowledge. Second, when we talked about experimentation and observation, we came to know that in management, the experiments are conducted on human beings and human behavior, which is unpredictable, unlike the sciences, which is done in under controlled condition. And when we talked about universal validity, we came to know that management is not universally valid. Why? Because the principles of management are flexible in comparison to principles of science, which are very rigid. So they have to be modified as per the present situation. So when we talk about management as science, we say it is inexact science because of the following reasons. One, it is based on human behavior, and human behavior is unpredictable, so outcomes cannot be replicated, and relatively very few people are trained in using science, so the principles stand there itself. Then we talked about the second, universal validity. It has to be modified. The principles of management have to be modified as per the present situation. So conclusion, management is inexact science. It's like soft science. It is neither precise or comprehensive like the actual sciences like physics and chemistry. Today we start with management as profession. Now, if you remember last year in +1 you did the term profession. And if you remember the profession, and we talked about a profession, we talked about the professionals, we talked about professional association, we talked about the lawyers, doctors, the remuneration they get as fee, and the services which they provide. So what has changed now in +2 when we talk about the nature of management and we compare profession with is management a profession or not? I being a teacher, am I a professional when I'm teaching management to you? So we're going to prove few points and we're going to get through it whether management is a profession or not. But before that, let's know what is profession and what do we mean by management as profession or simple profession. Right, starting with what is profession. See, when we talk about organization, they look for people with some kind of specific qualification. They want people to be skillful, and they get this skill from a professional association where they take a restricted entry, where they take an examination, they write an examination and they get entry into that professional association. Now that entry which is granted to them is again kind of restricted. Why is it restricted? Because until they write the exam, they cannot get an entry. So once they enter into the professional association, there is a certificate which is granted to them, and according to that certificate, they have to follow a particular code of conduct. So they provide their dedicated and committed services, they get fee as remuneration, but there are few criteria they have to fulfill. So we'll start with the first point of profession, that is body of knowledge, and I would like to fill up a thing for you. Organization look for individuals with what kind of qualification? They look for individuals with specific qualification. When this qualification is regulated by professional association, so the qualification is regulated by professional association which grants entry. So here we have the grants entry, and there is an ethical code of conduct. Code of conduct means behavior pattern for the service motive. So we are providing service and it is called as profession. So it's kind of an occupation. When you talk about profession, it's a occupation which includes all these things. Now, talking about again profession, there are some features of profession. There are 5 features which we are going to discuss today. The first feature is well-defined body of knowledge. Now, what exactly do we mean by well-defined body of knowledge? You must be already aware of it by now because we've done it in 2 cases, one in art, the second in science. Now again, it's the same thing, acquired through instruction. When we talk about well-defined body of knowledge, profession is acquired through instruction. Yes, because there are books, they instruct, there are journals which solve problems because people write their own journals, they discuss their own theories, whatever their new innovation is, and there's a problem solving technique out there. So
there's an instruction to write journal and there's an instruction to people to tell that what is happening the latest. So yes, and there are principles which instruct the people how to go about with their professional qualification. It can be taught and studied. Profession can be taught and studied. Agreed, 100%. Now, what we are doing is we are critically evaluating and we are trying to analyze, is management a profession and is management body of knowledge? So answer is yes. How? Because all over the world management is taught. So we teach management all over the world. We are trying to teach people. Now, there are books, journals and universities. Same points. We have books, we have journals, we have universities which are trying to teach people. All business situations are considered, whether it's a business situation in recession or it's a in boom or otherwise, whichever kind of different businesses are, how they grow, whether it's a startup, all different business situations are considered and how the economy behaves with them. So everything is being considered out here. So there are institutions like IIMs where entry is restricted but management is taught. Entry is restricted but management is taught. So we have body of knowledge. प्रिंसिपल्स हैं भाई, किताबें हैं, सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस हम आपको मिल रहे हैं जर्नल्स के थ्रू, लोग अपनी नई नई थ्योरीज लिख रहे हैं. तो भाई ये प्रूव होता है कि मैनेजमेंट क्या है, 100% बॉडी ऑफ नॉलेज है. फर्स्ट पॉइंट वी प्रूव. हमने क्या प्रूव किया कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या ढूंढ रही थी, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन. ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हमें इसके थ्रू मिलती है. Second point, when we talk about management as profession as well as when we talk about profession. Profession कहता है entry restricted है, बिल्कुल एग्जाम देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सीए की बात कीजिए तो सीए को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी से एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उसको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है जिसको हम पहले सीपीटी कहते थे. सो वो एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है. अगर आप लॉयर हैं तो आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को नीट क्लियर करना पड़ता है. ऑफकोर्स other situations we'll consider after that. Entry to profession is restricted through an examination. हो गया, बात हो गई एग्जामिनेशन, एग्जाम भी देती. Acquiring an educational degree, तो जब आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, आप जिस कोर्स में जाते हैं वहां पर आपको एजुकेशनल डिग्री मिलती है. जैसे सीए को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी से प्रॉपर पूरी डिग्री मिलती है. अब क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? हाँ जी, सुन रहे हैं हम. मैनेजमेंट हैज वेरियस formal training institutions. I hope you heard about ISB Hyderabad, one of the best management institutes. वहाँ पर भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जीमैट क्लियर करना पड़ता है. अगर आप आईआईएमसी बात कर रहे हैं तो आपको कैट क्लियर करना पड़ता है, और कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको मैट क्लियर करना पड़ता है. ऑफ कोर्स रैट रेस है तो कैट मैट रैट सारा कुछ इकट्ठा आता है. ओके, these are provide training programs. What are they providing us? Training programs. Entry to these institutions is through an examination. Yes, restricted entry. भाई हमने ये बात प्रूव कर दी कि हाँ entry restricted है, लेकिन but there is a but out here. And what is a but like? But nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any degree. कोई डिग्री की जरूरत नहीं है. क्या आपके पापा के पास MBA की डिग्री है? बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके बिजनेस में आ जाते हैं. क्या उनके पास एमबीए की डिग्री है? और इंजीनियरिंग आपको इंजीनियर बनाती है या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बनाती है? तो बिजनेस प्रोफेशन है. एनीवन कैन बी अ मैनेजर अनलाइक मेडिसिन और लॉ वेयर वैलिड डिग्री इज रिक्वायर्ड. मैं कई बार कहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है, और मेरा कोई भी, मेरा बेटा जो कि मेरे से बहुत छोटा है and he's just doing his graduation, क्या वो आकर मेरी जगह पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता. ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा सकता? मेरा बिजनेस होता ना तो बिजनेस संभाल लेता, गद्दी संभाल लेता, लेकिन वो मेरी जगह पढ़ा नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है कि नोवेयर, अगर बिजनेस है तो आप उस बिजनेस को संभाल सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको वैलिड डिग्री की जरूरत है. तो नोवेयर इन द वर्ल्ड इट्स मैंडेटरी टू बी अ प्रोफेशनल, टू बी अ मैनेजर. एक ठेले वाला भी मैनेजर है, एक सोल प्रोप्राइटर भी मैनेजर है. सो जो ये एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, ये क्राइटेरिया भाई फुलफिल नहीं होता. यहाँ पर प्रोफेशन अलग है और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन अलग है. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ प्रोफेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 points. First was body of knowledge,
Second was restricted entry. Now the third point, professional association. Now here, what does professional association say? In all professions are affiliated to a professional association because what does it do? It regulates your entry. It regulates entry, grants you certificate of practice. If this professional association is not there, you cannot qualify as a professional. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो आप डॉक्टर के रूम में देखेंगे वहाँ पर सर्टिफिकेट लगा होता है, सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस। तो ये वो सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस जो है वो कौन ग्रांट करता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्रांट करती है हर एक डॉक्टर को जिस चीज में वो स्पेशलाइज करता है। फॉर्मली इट्स कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? बिहेवियर पैटर्न कि आपने एथिकली ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? ये बनाती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब क्या मैनेजमेंट में कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? क्योंकि लॉयर्स की तो बार काउंसिल है, डॉक्टर्स की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, तो क्या मैनेजर्स की कोई ऑल इंडिया लेवल पे कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? हाँ है। So does management has this professional association? Yes, both at national and international level. When you talk about levels, management associations have been formed. You know there are associations तो form हो रखे हैं। Have membership criteria, आप उसका member भी बन सकते हैं। They have proper code of conduct, behavior pattern भी है भाई, बहुत बढ़िया। हमारे इंडिया में है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड संजय किर्लोस्कर, he is the head of that association and he's a CEO of Kirloskar Brothers. So he looks after the All India Management Association. कभी नाम सुना है संजय किर्लोस्कर का किसी ने? क्यों नहीं सुना? अभी बताती हूँ मैं। But there is no compulsion for managers to be members of such association. Membership का तो कोई criteria ही। Membership criteria कहते हैं होना चाहिए पर है नहीं। There is statutory problem, legal problem. If CA doesn't go according to Indian Chartered Accountancy Institute, lawyer doesn't go according to Bar Council. आपने वो देखी होगी जॉली LLB2, उसमें वो अक्षय कुमार जो है मैनिपुलेट करता है तो बार काउंसिल एक्शन लेने को स्टार्ट हो जाती है। क्यों? प्रोफेशनल एसोसिएशन है भाई। पर मैनेजमेंट में मैनेजर अगर 100 रुपए की चीज 101 रुपए में बेचे तो पहले तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दूसरा क्या गुरुद्वारे में जाकर खाना खाएगा। So, if in management, what is there? But in management, there is no such problem if managers does not follow rules of All India Management Association. है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। क्यों होगी प्रॉब्लम? बिकॉज ये क्राइटेरिया पार्टली फुलफिल होता है। हमने संजय किर्लोस्कर का नाम नहीं सुना था, हमने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का नाम नहीं सुना था। अगर कहीं AIM में आता था तो हमें लगता था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है। नो डियर, इट्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट इस प्रोफेशनल एसोसिएशन का कोई मेंबरशिप क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, एसोसिएशन है पर इस एसोसिएशन की कोई स्टैट्यूटरी लीगल बैकिंग नहीं है और मैनेजर्स 100% एसोसिएशन के पूरे सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते। सो ये क्या है? पार्टली फुलफिल है। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने अभी आपको बताया ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमें कौन ग्रांट करता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? बिहेवियर पैटर्न। सो ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। होना चाहिए भाई, एथिक्स होने चाहिए। एथिक मीन्स मॉरल्स, व्हाट इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। दिस कंडक्ट गाइड्स बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। बिल्कुल ठीक। All doctors have to take oath of ethical practice. They cannot manipulate. So, in reality, doctors are not supposed to tell the sex, male or female. Unborn child का sex वो disclose नहीं कर सकते। ये उनकी ethical practice है। If somebody is challenging that, that's an unethical practice. You can just challenge that particular doctor also. इसका मतलब क्या कि वो they follow their professional code of conduct and they have their ethical code of conduct which they thoroughly follow. Now, does management follow ethical code of conduct? Management follow करती है ethical code of conduct. देखते हैं क्या कहते हैं। All India Management Association has devised a code of conduct है। आप अगर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन देखेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कोड ऑफ कंडक्ट की। इंटेग्रिटी से काम करो, फेयरनेस से काम करो, ओवर प्राइसिंग मत करो, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फाइंड द लिस्ट ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देयर आर बिजनेस एथिक्स एंड रूल्स टू बी फॉलोड। हमने लास्ट ईयर पूरा चैप्टर पढ़ा था बिजनेस एथिक्स के ऊपर। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था कि हाउ दीज बिजनेस एथिक्स इफेक्ट इफ द बिजनेस डज नॉट फॉलो द एथिक्स। तो
उसी में से एक चीज़ है कि बिजनेस कुछ एथिक्स फॉलो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी वार्निंग है नॉन वेज और वेज के लिए, तो ग्रीन और रेड डॉट है दोनों के दोनों, वेज के लिए ग्रीन डॉट है और नॉन वेज के लिए रेड डॉट है, सो वी फॉलो। बट देर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। टू दिस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं ये जो मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना जरूरी है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या हम बोलते हैं कि रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट, अगर आप कभी भी इस चीज को फुलफिल नहीं करते एज अ बिजनेसमैन, सो यू कैन बी चार्ज्ड बाय द कस्टमर। लेकिन उसका एक्शन क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट में, वो भी अब हुआ है। अगर प्रोफेशनल क्राइटेरिया से देखें तो क्या आप जाकर मैनेजर को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया और तुमने काम ऐसे कैसे करा, तुमने मुझे ओवर प्राइस कैसे चार्ज किया। हमें पता है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस गोइंग ऑन, हमें बहुत सारी डेली यूज की चीजें कमोडिटी हाई प्राइस पे मिल रही है। क्या हम वहां जाकर आर्ग्यू करते हैं कि आप हमें हाई प्राइस पे क्यों दे रहे हैं? वी डोंट आर्ग्यू, वी बाय, हमें पता है हमारी जरूरत है। तो अब उसके बाद आप जाकर किसी से कैश मेमो लेकर वहां पर चैलेंज करेंगे किसी को कि हाँ भाई इस बंदे ने हमें, इस मैनेजर ने हमें ये चीज महंगी दी थी। नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड आई जस्ट टोल्ड यू, अगर मैनेजर्स बहुत ज्यादा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे तो गुरुद्वारे में खाना खाना पड़ेगा भाई, और कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता, वी नो इट। So many examples are there where we have Asia's richest person, Dhirubhai Ambani's son Mukesh Ambani, Reliance, owner of Reliance, being the richest person. So no statutory backing. Therefore, managers work as they like. Next point है हमारा सर्विस मोटिव। What do we mean by सर्विस मोटिव? ना, हर एक बिजनेस का एक बेसिक मोटिव होता है। क्या बेसिक मोटिव है? हर एक प्रोफेशन का होता है एक मोटिव होता है टू सर्व द क्लाइंट। हाँ, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डेडिकेटेड कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो एक प्रोफेशनल है जैसे लॉयर, वो डेडिकेटेड कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डॉक्टर भी डेडिकेटेड कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सीए भी डेडिकेटेड कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये तो प्रोफेशनली क्राइटेरिया है इसका, इसको ये चीज करनी चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या सर्विस मोटिव है? मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ इट्स गोल। वो गोल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट हो सकता है और एक हॉस्पिटल के लिए सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है। तो बिजनेस कहता है कि भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए गुड्स बना रहा हूँ, ये मेरी सर्विस है। मैं तुम्हें वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी सर्विस है। और ये तुम्हें चीजें मिल रही है एट रीजनेबल प्राइसेस एट गुड क्वालिटी, ये मेरी सर्विस है। सो मैनेजमेंट ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करती, ये भी पार्टली फुलफिल्ड है। तो जब हम ये सारे क्रिटिकल इवैल्यूएशंस को देखते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट क्या है? इट इज यंग, ठीक है, एंड ग्रोइंग। अभी पूरा प्रोफेशन नहीं बना, यंग एंड ग्रोइंग प्रोफेशन। ये आपका क्या है? ये आपका कंक्लूजन है। मतलब क्या कि मैनेजमेंट अभी फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, इट्स यंग एंड ग्रोइंग प्रोफेशन बिकॉज ओनली फ्यू क्राइटेरियाज आर मेट एंड अदर क्राइटेरियाज आर पार्टली मेट। हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है पर वो भी फुलफिल नहीं होता। हम कह सकते हैं कि ये जो है पार्टली फुलफिल्ड है, स्टैट्यूटरी बैकिंग है लेकिन बहुत लीगल एक्शन नहीं है, ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है सॉरी, पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है। और जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन की तो उसकी कोई स्टेटस नहीं है। दैट मीन कंक्लूजन व्हाट डज इट से? इफ वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स मैनेजमेंट बीइंग अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज नॉट येट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। Thank you so much for listening, and I hope you have understood and followed what does it mean by management as profession. I'll be giving you more information about the next topic, coordination, in my next video. Take care, be safe, and lots of good wishes to you.